of excellence as silencer of many. I take special pride in welcoming Mrs. Shikha Banerjee ma'am amongst us. She is the principal of one of the prominent schools of the town, Seth Anandram Jaipuria. So let's welcome her in the talk show that is conducted by Raywings Learning Campus. I would like you people to welcome her with a round of applause. Thank you. So now we're going to conduct a talk on the role of mentorship in a student's life. So before I start asking you questions regarding mentor and mentee, I would like to know, like, how does you see the change in the students after receiving that award, Principal of the Year for the social cause, education towards social cause? First of all, let all of us understand that academics and education are not the same thing. Academics is about doing your theory and your practical in the classes, obtaining marks, getting placed somewhere, but it does not promise to make you a good human being. Whereas the purpose of education is to ensure that you become a good human being. So, from my side, my leadership has always been into making my children human being, a heart full of compassion, words that speak gentle, who feel for the others, do not resort to unfair means, and is able to give something back to the country. Giving more than what you take. That is the motto, should be the motto of any education. Right? So, children were never different. Situations kept changing. Pandemic had made things very difficult. The expansion of digitalization, I felt, was also a great threat to the human touch. As I told you, I believe in making humans, and digitalization takes you away from the human touch. You must admit, when your teacher puts her hand on your head and says, "Very well done," it has a difference than when you are sitting on the screen and someone says, "Well done." They are not the same. So, pandemic brought in this fear in my mind that what I believe education to be, are we going in the right direction? Right? But I'm happy. We are back to the physical world, to the physical connect with one another, where we see and understand the requirements in your campus, in your families, in your surrounding, your country, and the globe in general. Right? Absolutely, ma'am. Very well put. I'm sure like students are receiving insights out of like your words. So, moving further, I would like to know, like in all of us lives, there is one person we identify as our mentor or like as life coach. Who do you consider a person in your life? First of all, I'm contradicting your question that mentor need not be one. All right, absolutely. For me, all the people I come across somewhere become my mentor. I have a lot to learn from my students, from my teachers, from my family members, from the Bahadur who is standing at my gate, to the cook who cooks food in my family. They are all my mentors. It is about लूटना बोलते हैं ना, अच्छी चीजें. So let us just gather the best of things from the best of people. And there are many mentors, at least I have many mentors. You definitely got me thinking about it. So students, you can make a note that like we are supposed to learn from everyone that is happening around us, as Glenn said. So yes, considering the parameters prevailing in current scenario, what are the traits a good mentor should possess? Acha. I'm just deviating from your question for a little while. Because all those of you who are sitting here, are you convinced that a talk show like this can help you really? Do you think that way?
You think that way. I'll give you a reason to think that way. All right? Because today's children, you also, all of you, you'll ask so many questions. Why? 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 So in your mind, it may be that I just answered an examination, खाके सो जाते यार जाके वहां बैठा दिया फिर से. Alright? So I'm just giving you why a session like this can be of some real good help to you. So this is the story of a woodcutter. क्या बोलते हैं लकड़हारा. So this is a story of several years ago, 20, 25, 30 years ago. पहले की कहानी है. तो एक बंदा था, उसके पास जंगल था, जंगल में बहुत लकड़ियां थी और उसके पास बहुत सारे वुड कटर्स थे. And they used to chop wood, फिर उससे फर्नीचर बनता था, जो भी बनता था. He had a business. तो उसके पास एक बंदा था जो बहुत कमाल का काम करता था. Before everyone, he finished all his work, सब कुछ हो जाता था. And he was very proud because he was considered to be the best worker. तो अचानक से एक छोटा सा लड़का आया, छोटा इन द सेंस यंग, 21-22-23 साल का होगा, and asked for a job. तो मालिक ने रख भी लिया and he started working with the others. और फिर धीरे धीरे जो बेस्ट वर्कर था उसने ध्यान दिया कि ये लड़का तो मुझसे भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है और बहुत जल्दी से काम कर रहा है. So he started feeling jealous. बहुत ध्यान से देखता था कि करता क्या है, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है. जहां उसको दो पेड़ काटने थे, 4 काट दिया, बाकी लोगों ने तब तक 2 भी नहीं पहुंचे थे. I mean, what is happening? बहुत कोशिश की, उससे कंपटीशन, रोज नया ज्यादा करूंगा, नहीं हो रहा है. नया लड़का बार बार सर्च पास कर रहा है and he is absolutely frustrated. फिर अब रहा नहीं गया, बहुत कोशिश कर ली, नहीं हुआ, चलो उसके पास ही जाते हैं. So he went and asked him, आप क्या करते हो? How is it that you do so much of work? So the answer he gave was, I sharpen my axe every day. मैं अपने कुल्हाड़ी को रोज शार्प करता हूँ और वो शार्प कुल्हाड़ी उससे वो काम करवाता है जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं. So this applies to all of you. Every talk session that you have, हो सकता है 1 घंटा पौने घंटे की बातों में 5 बातें आपको ठीक लगे, कोई बात नहीं, आपका कलेक्शन तो बढ़ा ना. Am I right? So make sure कि बस मौका मिलता जाए और अपने आप को आप अपडेट करते जाओ. This brain and this word, your words should keep on getting sharper and sharper and sharper. Right? तो आज के क्यों का आंसर मिला आपको? मिला? चलो good. Now once again I'll go back to your question. So it was like, what are the traits a student should like look for in a mentor? The time that they are looking for a mentor, what exactly they need to look for? A mentor and a trainer or an ordinary teacher are not the same. Mentor is a person, mentor वो होता है जो आपकी दिखे जाने वाली क्वालिटीज को भी देखता है, जो नहीं दिखता है उसको भी देखते हैं. आप नहीं देखते हो, वो देखते हैं. And the approach is customized. आपके लिए जो सही है उसके लिए वो सही नहीं भी हो सकता है. So the mentor knows the difference. ये बच्चा डिजाइनिंग तो बहुत अच्छा करता है पर बोलने से शर्माता है. वो बच्चा बड़ा अच्छे से बोल देता है पर डिजाइनिंग में भी कमजोर है. One can go for marketing. Who should go for marketing? जो बोलता है अच्छा. And who should go for designing direct? The person who has a feel for directing, designing. So the fact remains, mentor वो होगा जो आपको बहुत ध्यान से देखेगा और आपकी बातों को समझते हुए, आपके हुनर को देखते हुए आपको एडवाइस करेगा. Because there are 3 A's, 3 तरह के A होते हैं. Attribute,
एट्रीब्यूट मतलब आपके हुनर, आपके गुण जो आप कर सकते हो। एक होता है एटीट्यूड, एक है जिसके पास बहुत अच्छे गुण तो है पर लेजी है, सोना ज्यादा है, रिलैक्स ज्यादा करना है, दोस्तों के साथ मस्ती ज्यादा करनी है। दैट एटीट्यूड इज रॉन्ग। एट्रीब्यूट तो है, गुण तो है, एटीट्यूड गलत है। और ये एटीट्यूड और ये एट्रीब्यूट मिला के डिसाइड करता है योर ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड इज द हाइट। आप किस हाइट तक जाएंगे ये दोनों कंपोनेंट्स मिलके डिसाइड करते हैं। एक आप में गुण है या नहीं, एक आप में प्रवृत्ति है या नहीं, डू यू वांट टू डू इट और नॉट। एंड बोथ दीज थिंग्स पुट टुगेदर विल डिसाइड कि आपको 5 फीट जाना है, 25 फीट जाना है, कहां तक जाना है। राइट? सो दिस इज वेयर योर मेंटर कम्स इनटू द पिक्चर, जो आपको बताए कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आपको तो मॉडल होना चाहिए था, आपने शायद कभी ध्यान ही ना दिया हो। You walk so smartly, so that you can go for a modeling maybe. तो वो जो आपकी बारीकियों को देखता है वो है आपका मेंटर, irrespective of what you are। गरीब घर से हो, अमीर घर से हो, क्या हो, that's besides the point, but that person sees what is evident, जो दिख रहा है, and what is not evident, वो भी उनको दिखता है। Right? And there is one more thing why you need a mentor. कभी कभी क्या होता है, 3-4 चीजों में आपका इंटरेस्ट होता है। Many of you may be having कि फैशन तो कर रहे हैं पर मुझे पोइट्री लिखना भी अच्छा लगता है, या समथिंग लाइक दैट। 3-4 अलग अलग चीजें हैं। एट टाइम्स यू आर इनडिसिसिव, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दैट इज व्हेन योर मेंटर कम्स इनटू द पिक्चर। और आपके मेंटर आपको बताते हैं, हाँ आप पोइट्री लिख तो लेते हो पर जो डिजाइन बनाते हो वो तो कमाल का बनाते हो। सो यू शुड वेंचर इनटू दैट। कभी कभी आपके पेरेंट्स, हमारे घर में सब लोग डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर ही बन जाओ, फैमिली की इज्जत खराब हो जाएगी अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो। दैट इज व्हाई व्हेन योर मेंटर टेल्स यू ठीक है कोई बात नहीं, आपके फैमिली में सब लोग डॉक्टर हैं, अग्रीड, पर आप तो डिजाइनर के हुनर को लेके आपने जन्म लिया है, यू शुड एक्सप्लोर दैट। राइट? Right. So if I sum up your words, what you want to say is knowing is one thing, but applying that knowledge at the right place, we need a mentor for it. Absolutely Right. correct. Absolutely correct. Right. So like in the land of mentors like Shri Krishna, Bhishma Pitama, Dronacharya, and Chanakya. With that paradigm shift to this present scenario, what would you suggest a student to like feel for a mentor? How do they seek more and more insights from the mentor? They hire a mentor, they go for a mentor, but they still don't know sometimes that how much to seek from them. So what suggestion would you? This question of yours will have 2 answers. Yes. One will be towards the teachers. Do we have teachers also over here? Yes. Yes. So the mentors, the teachers ideally should be the mentors. और बच्चा आगे बढ़ के आप तक पहुंचेगा तब जब वो आप में एम्पैथी और कंपैशन देखेगा, वो कंसर्न देखेगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट को देखेगा, तो आएगा आपके पास। चिल्ड्रन हैव ऑलवेज बीन वेरी सेंसिटिव, पर आज के बच्चे तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, एंड दे विल नॉट कम अप टू यू। वो आपके पास खुलकर बात ही नहीं करेंगे अगर उन्होंने वो चीज आप में नहीं देखा। राइट? सो फॉर द टीचर्स आई वुड लाइक टू से यू हैव टू बिकम मेंटर्स। यहाँ पे लगा के नहीं घूम सकते हैं आई एम योर मेंटर, कोई फायदा नहीं है। इट हैज टू बी स्पेल्ड आउट। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातें, आपका तरीका, आपकी डीलिंग, that will prove whether you are actually a mentor or not a mentor. And for the students it will be
Don't always go by what your teachers are portraying. मैं अपनी बात बताती हूँ, जब डांटती हूँ बच्चों को, जिंदगी खराब कर दूंगी तुम्हारी, स्कूल से निकाल दिया तो कहीं एडमिशन तक नहीं मिलेगा आपको, पर ये मेरे मन की बात नहीं है, ये हकीकत नहीं है, ये वो कड़वा घूंट है जो कभी कभी टीचर्स को लगता है आपको इसकी जरूरत है. दे फील दैट यू नीड इट. तो डोंट मिस अंडरस्टैंड योर टीचर्स. गलत मत समझो अपने टीचर्स को. वो आपके लिए हैं. दे आर हियर बिकॉज ऑफ यू. All of us who are teachers, maybe a principal like me, we are in the institution because of you. तुम हो तो हम हैं. ये बात कभी मत भूलो. अब हम रोज निकल के अपने स्टूडेंट्स को ये तो नहीं सुना रहे हैं ना, तुम हो तो मैं हूं, पर यही हकीकत है, तुम हो तो मैं हूं. Believe in your teachers, and there are many others also, but just now I'm quoting this for your teachers because they see you day in and day out. रोज देख रहे हैं, सुबह शाम देख रहे हैं, right? So, as like you suggested a few things about teachers, so do you think like compassion is one of them? So, do they need to have compassion all the time, or they need to be strict most of the time, or these are like two different dynamics? Let me first explain. Along with compassion, I used another word, empathy. Empathy, sympathy नहीं है. Sympathy is हा बेचारा, 35 नंबर मिला, 40 मिलता तो पास कर जाता, बेचारा. That is sympathy. And empathy is जब मैं आपके साथ लग के वो पहुंचा दूं, that is empathy. जब आपके साथ वो पूरी तरह से जुड़ के काम करवा लेते हैं, that is empathy. So empathy has to be there everywhere. If a teacher is not empathetic, then probably everything is lost. So, is there any specific age for the students when they start seeking mentorship? No. Or No. like the phase, maybe a class? No. क्लास 1 से लोग, मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा. द चाइल्ड लाइक्स आइसक्रीम. क्लास 1 का बच्चा बोलता है मुझे मैं आइसक्रीम सेल करूंगा. उसका एम है मैं आइसक्रीम सेल करूंगा. ही डजंट नो. बट 5 तक आते आते बच्चा कुछ और बोल रहा है, 9 तक आते आते बच्चा कुछ और बोल रहा है, एंड starts looking into life. Not only is looking into life, he starts looking into कि मुझे क्या करते हुए अच्छा लग रहा है. Because this is very important. आज के जमाने में अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है, so it's going to be a disaster. ये पहले के तरह नहीं है. पहले के लोग 7-8 घंटा काम करके घर में आके रिलैक्स करना, घूमना फिरना, मूवी देखना, बहुत कुछ आराम से करते हैं. Today, any of you, whatever you take up, जो भी आप करोगे, it will demand 10 to 12 to 16 hours of your time. 24 में से उसने ले लिया 10, 12, 15 घंटा. तो इसलिए अगर आप अपने उस प्रोफेशन में नहीं हो जिसको करते हुए आपको अच्छा लगता है, यू कांट सर्वाइव. मर जाओगे, राइट? सो देयर इज नो एज एक्चुअली. दिस एक 1 क्लास का बच्चा 5 का, 8 का, 10 का, 12 का, दे आर एक्सप्लोरिंग. वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, राइट? If we refer to career selection, the time that they are trying to opt for a career out of so many, as like at the time I we belong to, that time when there wasn't much of the option. As of then, I am from a science stream, so my stream was PCM. So I was told to pursue BTech, engineering, or like the students who take like biology, mostly they have been asked to pursue their medical. So I did my engineering, but like then I changed my career to the area where I wanted to make my career in. That is like English, literature, and all. So now they have like lot of options. So that way I wanted to know your like suggestion that what is the right class these students should start seeking for mentorship. Mentorship with reference to career. Whether like they can choose the right path since beginning. Not after pursuing graduation, then like they are switching to one career from the other one. That is what like I wanted to know. Is that like a 10 class? No. See, according to the national education policy, the new national education policy is talking about
vocational training from middle school. Right. All right, middle school means 6, 7, 8 classes. And what is the purpose? कि मैं थोड़ा सा शेफ का काम कर लूं और देख लूं मुझे शेफ बनना अच्छा लगेगा क्या. दैट इज वे ऑफ टेस्टिंग. बुफे में जब हम खाना खाने जाते हैं थोड़ा सा पनीर देखा, नहीं तो पनीर उतना अच्छा नहीं है, चलो ये वाला थोड़ा सा देख. दिस इज द एक्सप्लोरेशन टाइम. From middle school they start exploring, and when you come to classes 9 to 12 there is a concept of a fifth and a sixth subject, जहाँ आप कुछ और ले रहे हो, मेन सब्जेक्ट्स को छोड़ के आर्ट ले रहे हो, म्यूजिक ले रहे हो, या एंटरप्रेन्योरशिप ले रहे हो, या कमर्शियल एप्लीकेशन ले रहे हो, आईटी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो. व्हाई? टू गेट दैट फील, क्या ये वाकई में मुझे अच्छा लगता है. तो ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में हो जाते हैं. Okay. So Some experiments. Middle school time when they are choosing. No, middle school they are choosing something. High school also they are choosing something जो कि गलत भी हो सकता है, which is all right, no problem. Seriously, career counseling and mentorship should begin from the first year of college, right from the first year. इसमें से जो लकी है 9, 10, 11, 12 पढ़ते समय उन्होंने जो भी करा, जिस भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को लेके उन्होंने एक्सप्लोर किया, वो उसे पसंद आ गया और he or she is doing very well. कोई बात नहीं, फिर तो हो ही गया. अब प्रॉब्लम है जिन्होंने नहीं सिलेक्ट किया. They can go in right from the first year. Okay, got that. So now, like, I'm sure you have mentored many students. So would you like to highlight some, like a set of certain characteristics that you found in your mentees, the way that you guided them, and they were able to prove their method according to your guidance? So what were those set of skills that they possessed? See, today's education is talking about 21st century skills. The 4 C's of 21st century skill is collaboration, creativity, communication, and critical thinking. A mentor should make sure that these skills are ingrained in the children first, irrespective of where they want to go. This is one. And guidance should be very liberal. Liberal in the sense, मैं बोल रही हूं ना, तुम यही करो. Okay. No, no, that cannot happen. गलती करने की आजादी हर बच्चे के पास होनी चाहिए. Parents have to be counseled into allowing them to make mistakes. We all make mistakes and we learn from our mistakes. There is never a first perfect time. I'm sorry, I don't believe in that at all. They have to be allowed to make mistakes. हो सकता है एक साल खराब हो गया, इस साल में ये ट्राई किया था, नहीं हुआ, next time doesn't matter. It's better than wasting the whole life. Okay. Right? Truly makes sense. So is there any short, like kind of a method that a mentor can give to a student that if you follow this path, so you can like get success is guaranteed that way? No. There isn't anything. No. Okay. There isn't. So as like you earlier said, they have to be, no, main thing is, you know what, students, I think many of you will agree, आप लोग मेरी बात शायद आप लोगों को ठीक लगे, they are very badly at times pressurized by the parent. पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग टीचर्स, मेंटर्स, बच्चों के पेरेंट्स तक ये बात जरूर पहुंचाएं, गलती करने की आजादी मिलनी चाहिए. At school level as Oh well? yes, oh yes, oh yes, oh yes. Absolutely. So ma'am, do you encounter the students who come like opting for science group and then like they want to switch to humanities or commerce later on? Again, Yes. students are not my problem. Okay. Parents are my problem. Absolutely. मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया. मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा सपना पूरा करेगा मेरा बेटा. अरे भाई, क्यों आपका सपना पूरा करेगा आपका बेटा? आपने अपनी जिंदगी जी ली, अब वो अपना सपना पूरा करेगा कि आपका सपना पूरा करेगा? बताओ. So, do you have various like guidance or words of wisdom to students
wherein they can seek mentorship at different phases of their life. So one word of wisdom for a student, then like for an entrepreneur, and then like for a professional. It is not only for the students, it is for the institution, the students and their parents. It is a triangle. On one corner, it's the parents, another corner, it's the students, another corner, it is the institution. Unless you are in complete sync, triangle to nahi banega. If you cannot bring them together, students alone cannot do anything, institutes alone cannot do anything, similarly, parents alone cannot do anything. It has to be the synchronization of parents, students, and institution. Absolutely. So, like a trinity, like we need to break forward. Yeah. But to the students, I want to say one thing. Never lose respect for your parents or your institution. जिस दिन आपने रेस्पेक्ट करना बंद कर दिया ना, उस दिन आपका बैंक अकाउंट लॉक हो गया. आपके इमोशनल वेल्थ का जो बैंक अकाउंट है ना, वो बंद हो गया. क्योंकि जो आज आप दोगे वही आपके पास 20 साल के बाद वापस आने वाला है. So make sure that you don't lose respect. We are debating on a certain thing. We are talking about certain relevant things, which is fine. But parents are parents. Your institution and the teachers are your well-wishers. Do not lose respect. Respect बिल्कुल म्यूचुअल चीज है. जो दिया वही वापस मिलेगा, नहीं दिया नहीं मिलेगा. Please remember this. Okay? Truly makes sense. I believe, guys, that is a word of wisdom for all of us. So now, as you already highlighted the role of teacher turning into a mentor. So how would you suggest these students as well that the time like these teachers are turning into mentor, they are doing it for their well-being. So they are not like reciprocal so often. So is there anything like they need to inculcate in their personalities and their thought process to accept the words from their teachers? Because mostly I have heard teachers say like, you are not my parent. So I have told my parents this and so I am doing that. You need not to intervene into our lifestyle at the college campus as well. So do you have anything to say to these students? I think I've already given an answer to that question of yours. Mutual respect is extremely important. और टीचर्स की बात सुनने की भी जरूरत नहीं है. पेरेंट्स की बात भी मत सुनिए, कोई बात नहीं है. पर एटलीस्ट उसके बारे में सोचिए तो जो बोला गया है. थिंक अबाउट इट. समथिंग मे बी ट्रू. उसमें से उन्होंने 10 चीजें बोली है, उसमें से 4 तो सही हो भी सकता है. कम से कम बेनिफिट ऑफ डाउट तो दीजिए. राइट? लिसन टू देम. मत सुनना पूरी बात, थोड़ा सुन लो, थोड़ा ये कर लो कि उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया था कि मैं ये चीज ठीक से नहीं कर पा रहा हूं. दे आर नॉट योर एनिमीज. वो आपके दुश्मन नहीं है. सो हैव दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट. और सुन लो, नोट कर लो कहीं पे. और अगर आपने 4 चीजें नोट करी है, बेशक उसमें से एक काट दो. ये मेरे मेंटर ने बोला था, नहीं ये तो मेरे लिए लागू नहीं होता है, कोई बात नहीं. और उसमें से 2-1 तो बात ऐसे जरूर निकलेगी जो आप पे लागू होता है. कभी कभी हम अपने कमजोरियों को मानने से इनकार करते हैं. We refuse to accept our shortcomings. पर सबसे पहले समझ लो, शॉर्टकमिंग तो सब में है. No one is perfect. अगर अपनी शॉर्टकमिंग नहीं मानोगे तो सुधरोगे कैसे? निंदुक नियरे राखिए, आंगन कुटी चवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल देख कराए. सुन लीजिए. Is it okay? Your work, so I believe that you are highlighting the importance of SWOT analysis in students' life, right? So they need to do that so that they can listen to everybody. Absolutely, absolutely, absolutely. And one thing, since we spoke about SWOT analysis, how many of you really understand SWOT analysis? Have they been ever groomed about SWOT analysis? I believe like most of them have done that. It will be taught to them in the third year. Yeah. So just now they have not gone into it, but just for your basic information, let me tell you, SWOT stands for
strength, weakness, opportunity and threat. इनमें फर्क क्या है? The first two, strength and weakness, आपके अंदर होता है और opportunity and threat आपके situation में होता है. So you have to understand how to handle it. Is that okay? Ma'am, do you believe in the concept of career counseling? As like you said, students should be given opportunity or liberty to make mistakes, to choose their career after trial and error method maybe. So do you think like if they seek a career counselor at the first place, so they can like save their time, maybe like they are able to find the right option they were always looking for? It is definitely essential. There are many students जो हमारे स्कूल से 5 साल 10 साल पहले पास आउट हो गए हैं, वो लौट के एक ही बात बोलते हैं. There is a common thing that they say कि किसी ने हमें पहले नहीं बताया था. Something, anything. Right. That ये हम कर सकते थे या whatever. But this phrase is very common. किसी ने तो हमें पहले बताया ही नहीं था. You people belong to that generation who are lucky because now career counseling is an important part of education. जहाँ भी आप चले जाओ, career counseling is given a lot of importance. Again I am repeating, सुन तो लो, करना ना करना तुम्हारी मर्जी, पर सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है. ये दिन आपके जिंदगी में न आए कि आपको लौट के किसी को बोलना पड़े हमें किसी ने बताया तो नहीं था. So at least listen to it. Right? Makes sense. So ma'am, after listening to you, as like we are moving towards the end of the session, so would you suggest that schools or institutions should hire professional mentors and career counselors to provide timely guidance to their students? Very much so. See, everyone has an expertise. The first set of career counselors definitely are the teachers. बेसिक चीजें उनको आपके बारे में जितना पता है दूसरों को नहीं पता होता है, definitely. But again, your teachers are their subject experts. They don't know about all careers. They don't know about the requirements. So yes, a professional career counselor is definitely required. Absolutely. So like ma'am is here. If you have any question, anyone from the audience, like you can ask something that you were really looking for, like to know from anyone that's here. So yes, please. She'll need a mic. Firstly, good afternoon, ma'am. This Good session afternoon. was really informative. I would really like to ask one question. If you would like to give one advice to me as a mentor, what would be that? I'll go back to the same thing, but इस बार एग्जाम्पल के साथ बोलते हैं. भगवान ने एक मुंह दिया है, 2 कान दिए हैं, तो जितना बोलो उससे दुगुना सुनो. Listen, listen, listen. Anyone else? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. My question is that most schools and colleges are hiring nowadays counselors and psychiatrists both, and most of the students, those who have a weak learning path. So basically, teachers suggested them to go to the counselor and ask them, and counselors do suggest them the exercises and all that stuff, but students are not following them. So that there will be no result for the same. So how can we, guide the students that they should take these steps to do that exercise or whatever the counselor has told them? A little more of awareness needs to be created among the children. It is almost like saying मैं डॉक्टर के पास तो गया, पर डॉक्टर का दवाई मुझे पसंद नहीं आया तो नहीं खा रहे, हम क्यों नहीं अच्छे हो रहे? अब डॉक्टर की दवाई नहीं खाई तो अच्छे तो नहीं होना है ना. So through the teachers, through your set of counselors in the school, this awareness needs to be created कि आपके लिए अच्छा क्या है. नहीं समझोगे फिर there's no actually nothing that can be done, right? Absolutely. So like we have almost exchanged like our thoughts. So I would like ma'am to like wind up by saying a few words of wisdom to our students as well as like the mentors and teachers in here. I gave you a little bit of idea about the 4 C's of the 21st century skills. Please work on this. All of them are going to be essential. अगर एक पान की दुकान भी बनाने वाले हो ना, वहां भी अगर बोलना आपको ठीक से नहीं आया, you'll never get a good client. First of all, groom yourself.
और आजकल हम लोग स्कूल्स में एक आउट ऑफ सिलेबस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं सोशियो इमोशनल लर्निंग। इट हैज 5 कंपोनेंट्स। मैं सबकी बात नहीं करूंगी, मैं फर्स्ट कंपोनेंट की बात करूंगी। एंड द फर्स्ट कंपोनेंट सेज सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को पहचानो। आपकी कमजोरी आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। someone is tall, someone is short, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बोलते हुए थोड़ा सा तोतलाता है, it can be anything। और जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, चाहे आप जैसे भी हो, यू आर स्पेशल। भगवान ने सिर्फ एक बनाया है, आप एक ही हो। शिखा बैनर्जी मैं एक ही है, बहुत स्पेशल हो, बहुत यूनिक है, खास हो। अपने आप को प्यार करो, अपने आप को इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे, बाकी लोगों के लिए रिस्पेक्ट अपने आप आ जाएगी। कैसे अपने आप आ जाएगी? क्योंकि आप अगर अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो तो आप एक कहीं बाहर खड़े होकर गाली नहीं बकोगे, क्योंकि आपको लगेगा लोग मुझे क्या कहेंगे। सो इफ यू लर्न टू लव योरसेल्फ, यू विल नेवर अब्यूज एनीवन। अपने आप को प्यार करो, अपने आप, अपनी जो भी कमजोरी है, ये समझ लो सबके पास कुछ ना कुछ कमजोरी है। नो वन इज परफेक्ट, एक्सेप्ट द वे यू आर। आप सबसे अच्छे हैं। हम लोग जब छोटे क्लास में थे ना, हमारी एक टीचर हुआ करती थी, वो हम लोगों को बहुत मोटिवेट करती थी और कहती थी दिन में एक बार आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाना, किसी के सामने नहीं, अकेले, कोई नहीं रहे कमरे में, एक शीशे के सामने खड़े हो जाना और ऐसे बनाना, ऐसे, और शीशे की तरफ देखते हुए कहना क्या पीस बनाया है भगवान ने। राइट? तो आप लोग सब लोग ऐसे ही हो, भगवान के बनाए हुए बहुत स्पेशल पीस हो। सो लव योरसेल्फ एंड द होल वर्ल्ड विल लव यू। राइट? थैंक यू। It was lovely interacting with you, ma'am. Looking forward for many more associations with you. Thank you so much for your presence. Thank you.